Welcome students, very good morning to all the students जो पेपर पे एंटी नेट मैनेजमेंट 2019 एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं पिछली सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये फ्रेश सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेश सीरीज का नाम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। ये काफ़ी मिलती जुलती सीरीज है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट से, पर इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स उस सीरीज में रह गए थे और डिटेल में नहीं थे वो इस सीरीज में डेप्थ में है, डिटेल में है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, कोई भी वीडियो टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक को आपको किसी भी कॉन्सेप्ट पे कभी भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका वीडियो हम तुरंत अपलोड कर देंगे चैनल पे। और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर मेंशन कीजिएगा चैनल के बारे में। ये डेडिकेटेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए एक चैनल है। मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स हम इस पर डिस्कस करते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं चैनल से। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेट्स कंटिन्यू प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं डेविड मैकलन की 3 नीड मॉडल। सिंपल मॉडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये काफ़ी फेमस मैनेजमेंट थिंकर और फिलोसफर हैं, उनका नाम डेविड मैकलन है। उन्होंने 3 नीड मॉडल दिया था। यह एक मॉडल ऑफ मोटिवेशन है विच इज बेस्ड ऑन द 3 टाइप्स ऑफ नीड्स: अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। ये 3 प्रकार की नीड है। इनको नीड फॉर अचीवमेंट कहा गया है। ड्राइव टू एक्सेल, एडवांस और ग्रो, अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है। नीड फॉर पावर है ड्राइव टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड सिचुएशंस। शॉर्ट में एनपाव कहा है, एनएक कहा है और एनएफ कहा है। नीड फॉर एफिलिएशन टू ड्राइव फॉर ए फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कंटिन्यू। Then we have Aldefers also revised Maslow theory in 3 other ways. What are the ways? He argued that the 3 need categories form a hierarchy only in the sense of decreasing concurrents. That is, as we move from a focus on the existence to relatedness to growth needs, the ways can satisfy those needs become increasingly abstract. He recognized that rise in the level of satisfaction of our existence and relatedness needs may result in decrease in their importance to us. Very important key point, make a note of it. Growth needs become more important as we successfully satisfy them. काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ग्रोथ नीड जैसे जैसे वो सक्सेसफुली सेटिस्फाई होती हैं। दैट इज वी आर एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, वी लुक टू हायर गोल्स। इन सो डूइंग वी अगेन डिससैटिस्फाइड। He reasoned that we are likely to try to first satisfy the most concrete needs, then to move on to more abstract needs. In this sense, Aldeffer sounds somewhat like Maslow, suggesting a pattern of satisfaction, progression, that is, as one need is satisfied, we must progress to next higher need. जैसे एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, हमें नेक्स्ट हायर नीड पे मूव ऑन कर जाना चाहिए। Very important theory, reinforcement theory, can be asked in coming exams. Reinforcement theory is based on the concepts of apparent conditioning. Apparent conditioning के concept पे based है theory. Well-known psychologist B.F. Skinner, इन्होंने theory को दिया था। Theory argue करती है behavior of people is largely determined by its consequences. Behavior consequences के द्वारा largely determined होता है। Positive reinforcement, it entails the use of rewards or other positive consequences that stimulates desired behavior and extends the probability of repeating such behavior in the future. Positive reinforcers can be money, praise, promotion, recognition, etc. Any of them they can be. Let's continue. Then you have negative reinforcement. This is a strategy also called avoidance learning. It implies the use of unpleasant consequences to condition individuals to avoid behaving in undesirable ways. By making unpleasant consequences contingent on undesirable behavior, individuals learn to systematically change patterns of behavior. In work environments, training, safety warnings, orientation sessions, and counseling help alert employees against negative consequences of undesirable behavior. Let's continue. Extinction, very important concept. Let's see what is this all about. There is withdrawal of all forms of reinforcement to remove undesirable behavior. For instance, a disruptive employee
who is punished by his supervisor for his undesirable behavior may continue the disruptions because of the tension they bring. By ignoring or isolating the disruptive employee, attention is withheld and possibly also the motivation for fighting. Let's continue. Simple and self-explanatory. Not much of the explanation needed in these. Punishment. This is a tool when an unpleasant or undesirable behavior needs to be reduced. जब अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करना होता है तो एक टूल यूज किया जाता है जिसे हम पनिशमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a worker's wages may be deducted if the quality of goods produced is substandard quality. क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है तो उसके वेजेस रिड्यूस कर दिए गए हैं. एक पनिशमेंट है. 3 types of clicks. Very important. Vertical click. It consists of people working in the same department, drawing membership regardless of ranks. For example, superior may be member in a group consisting mainly of subordinates. Such groups cutting across hierarchical lines develop because of the earlier acquaintance of people or because the superior is dependent upon the subordinate for some formal purposes. Let's continue. Horizontal click. It consists of people of more or less same rank and working in the same unit. This is the most common kind of informal group. The members have certain common interest for whose achievements they follow certain norms and standards. Mixed or random click. Such a group draws members from different ranks, departments and physical locations that come together for a common purpose. The members may be residing in the same locality and traveling by the common bus, or they may be members of the common club. Next important theory, propagative theory. Let us see what it is all about. Individuals affiliate with one another because of spatial or geographical proximity. In an organization, employees who work in the same area of the plant or office would more probably form into groups than those who are not physically located together. The propagative theory explains a basic factor, that is proximity of people at the workplace, which leads to formation of groups. Very important. This phenomena is observed in daily practice by all of us. Everyone observes this phenomena. Rest of the topic we'll see in next class. I'm pretty sure you are liking the series. If you like the series, just do one thing. If you want the channel to continue, please subscribe the channel and hit the bell icon so receive the notification as soon as the video is uploaded. Facing any challenge, any difficulty in any subject or concept, mention in the comment box. We'll try to upload the video as soon as possible. And let us call off for the day. We'll meet soon in the next class and continue our part of series, Principles and Practices of Management.